obstacle that comes in your way, throw them in the water. Get out right now! I'm security. Step 1 हो गया. Step 2. Take your stance and put one leg up on the wall of the pool. And then you're gonna push the wall away so that you can get pushed into the water. Alright? Any lifeless obstacle? Push in the water. Third step भी हो गया. Now we go till there and come back. In however seconds. Let's put a timer. If I can edit a timer, I will. And let's go. 3, 2, 1, go. Okay. R.I.P. my ring, my brother. R.I.P. Anyways, so this was however time I took to complete this much of distance. It's probably 10-20 feet. I don't know how much feet is it. But now I have a backpack obstacle, and for this obstacle, you will tell your obstacle to close your eyes and take a deep breath. Close your eyes, take a deep breath, and you will push the obstacle. Push your obstacle to your side, and now we're gonna do some backstroke. Okay? We don't need the goggles, but we do because sometimes the water gets in your eyes and you can get uncomfortable, and then you get drowned in the middle of the pool. So don't do that. Goggles on, both your legs on the wall. Wait, oh my god, yeah, on the wall and push. Now I'm gonna come back. You saw me. The angle is a little bit weird, but yeah. So you put one hand out when you think that you're gonna reach because you don't know what's going to be happening behind you. So you want to put a hand so you don't bonk your head. I learned that the hard way. Okay. You can do some swimming without goggles if you keep your eyes closed, but I don't like to keep my eyes closed because I get scared. Some shark might eat me. And you'll be like, wow, there are no sharks in the pool, but it is in my mind. If there can be monsters when I close my eyes in the shower, there can be sharks in the pool as well. Hi! We got dressed up for गरबा आफ्टर सो लॉन्ग. मतलब लिटरली आज कौन सा दिन है? आज नहीं मालूम. 22 को शुरू हुआ था, आज 27 है. 5 दिन है आज. ओके, पंचमी यू कैन से. हाँ, फिर 5 days we were at home, we were just listening to the music outside and not going. But आज पता नहीं क्यों एकदम आज एक्चुअली क्योंकि आज फूड स्टॉल भी लगा है. Being the bookers that we are going and we are gonna eat and then we are gonna dance. Okay. But घर में मेरे को रोटी बनाना था, बट मैं रोटी नहीं बनाया. तो अभी क्या होगा? आटा तो है, आके रोटी बनाना. ऑमलेट बनेगा. ऑमलेट तो नहीं बनेगा, नवरात्रि में नहीं खाते नॉनवेज. तहल का थेपला बनेगा. तो आके रोटी बनाना पड़ेगा. A moment for the outfits, please. And इसका आउटफिट we just bought this. Even I bought. Here it is. चोली के पीछे. I have covered it all पीछे क्या है? with my dupatta, so I don't know if it's going to say, but other than that, I featuring our clothes. clothes dryer because धूप नहीं आ रही अभी भी,
So bye. Hi guys, I'm gonna do my makeup for Diwali, and firstly, 3, 2, 1, let's go. I'm gonna start with some skin prep. You need to moisturize your face very well, so I'm gonna take a lot of it and just lather it all on my face and my neck, and to make sure it's moisturized. Then I'm going to moisturize my lips with Vaseline Coco Glow. It's my favorite and I love the smell. And I'm gonna start with some color correcting using green for the reddish areas because of the acne marks on my face. And I'm also going to go with some orange for the under eyes. I have lightened the orange to suit my skin tone. That's one step that I've done. And I'm gonna spread it all over, put it on my dark places on my skin, and just blend it all away. And I'm going to layer it with some concealer, and because I don't have a foundation of my skin tone, so I'm just gonna put concealer all over my face as foundation, and I'm gonna just cake it on and make sure it's blended. Blend some more with some beauty blender as well, and yeah, so that it becomes my skin basically, and flawless skin. Next, I'm gonna go with a foundation that is not my skin tone, but I'm gonna use it as a base for my eyes so that the eyeshadow is popping. So I'm just gonna take some sponge and dip it in the foundation and put it all over my eye. And I use my fingers because fingers are better than the brushes and the sponges. So also putting also a little bit with the sponge because um, I make sure that it's blended properly. And I'm gonna put some blush now. All of these steps are cream first, and then we're gonna go on to powders. So, first cream blush, I'm warming it up on my arm, smiling, putting it on my cheek. It looks like I put it all over my cheeks, which is kind of the goal here, and I want the rosy feel, not the high point ones, the rosy ones. And now, powder, and I'm going to bake on my face. This is my favorite step. I don't know why. It's like I love doing this because it makes my skin last all night, and like I don't have much sweat disturbing my makeup. So this is the crucial step that I do, is baking all over the face. The most sweaty areas that I have and oily areas that I have is underneath my eyes. And you can see they look like the ones that Kylie Jenner does, but I don't care. I am that oily and sweaty most of the time, so it works for me. Now I'm gonna move on to eyeshadow and let the powder bake in our face, and I'm gonna just go on with the eyeshadow. This is eyeshadow by Mars, and I'm gonna use the darkest red shade and a little bit lighter red shade of it. I'm gonna take the shade Kutub and just put it all over my eye, and only covering half of the eye, but because I have hooded lids, so I'm just going to go in fully with Kutub shade all over my eye, and I'm going to take India Gate and put it in the middle of my eye, and then Kutub will be on the corners so that there is a nice shading effect. And I'm going to use this other eyeshadow palette and use, this is my birthday gift. As you can see, there is but happy birthday written.
And the other palette, I'm going to use some lighter highlighter shades and put it in the inner corner of my eye so that the eyes pop. And this is my favorite step. I don't care how 2016 it actually is. I love doing this in any eyeshadow look that I do. Next, I'm gonna take some what do you call that? Earbuds. Sorry, earbuds. I'm just going to dry out my waterline. I loved this step. I never used to do this, but for Diwali, I wanted to do that, and it really changed the game for me. And I'm gonna apply my kajal on the waterline. This part always makes me not water my eyes, makes my eyes water. Yes, and but now it was not like that. The earbud thing worked out great for me, and now I'm locking in to put my eyeliner because it I was so scared of ruining it and like ruining my mood for the rest of the night, but I pulled through and I made an eyeliner look. And this is why I cannot show you what was going on because I was clocked in and locked in. I don't know what the lingo is, but whatever it was, I was that. And now, time for mascara. Finally, I love this step. It makes my eyes open more, and I feel that I've slept through the night, which I'd never do. So, yeah, it's my favorite step. Eyes is always my favorite step. I don't know, I love it. Yeah. Now I'm gonna take a red lip liner, line my lips. This was a conscious choice. I don't know if it was too much, but it all came together perfectly. It was not that, the rules say bold eyes and bold lips are no, but it went well with this. And the lipstick was Divine Wine. My hands are all dirty, and now I'm going to just brush away the baking. After I brushed it off, it looked so good together. My face was flawless, and the makeup held together the entire night almost. And I also felt very comfortable in the skin. I was not that uncomfortable and cakey, which I really liked. Hi guys, this is all me decked up. Diwali, oh my god. Chinuri. What else? Anyways, so I want to do a photo shoot. One more accessory. I was going to wear something nice silver one, but then go clash it up. It's all gold and checked up. And now I'm going to show you some of the decorations that we made. Enter with some nice India. This one paper lantern that we made using foam paper. It's supposed to be like this. We made one more. These are the lip and art tea light holders that we made. So many of them. So that was all that we made, and आज हम लोग रानी बाग घूमने आए हैं। इसको जीजा माता उद्यान भी कहते हैं। ये भाईखला में है, भाईखला मुंबई। और ये देखिए, ये सब सीगल है, इधर सीगल है और उसके साथ दूसरे भी बड़े बड़े चिड़िए हैं। इधर सब गिद्ध भी बैठा है। आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा तो बच्चे चिल्ला रहे हैं। सारे हैं, गिद्ध बहुत सारे हैं। उसको दिखाइए, अपनी जगह दिखाइए जूम करके। ये बड़े बड़े हैं। ये छोटा बच्चा भी आया घूमने यहाँ पे। ये बच्चा भी घूम रहा है। बच्चे की माँ भी नहीं है। नाइस। तरफ जा रहे हैं। वो चिड़िया को दिखाओ, देखो बड़ा। अब आप लोग जरा बताइए कमेंट करके कि कौन सा चिड़िया है।
चिड़िया का नाम क्या है? आपको मिलेगा 5 रुपया। 5 रुपया फॉर करेक्ट आंसर। और आप लोग ये जो देख रहे हैं ये चेन इसलिए चेन लगाया का जाता रीजन है। क्या है? चेन इसलिए लगाया जाता है कि कोई चिड़िया इससे बाहर ना जा पाए, इससे भाग सकते हैं चिड़िया, इसलिए चेन लगाया गया। भारी चेन है इसलिए कोई भाग नहीं सकता इसलिए। This is a monarch butterfly. मेरी टीचर would be very proud of me. ये मेरा हर आर्ट एलिमेंट में यही होता है। ये मैं हूँ एज एन आर्टिस्ट। लगता तो है नहीं। Star tortoise who breathes. डेविड एटनबर्ग। टॉर्टॉइज और टर्टल में क्या फर्क है आप बताइए? टॉर्टॉइज जो है वो जमीन पे रहता है, टर्टल जो है पानी में रहता है। यस बिल्कुल। टर्टल मांसाहारी होता है वो और बोर्ड पढ़ टॉर्टॉइज के जो देख होता है रहे हैं, शाकाहारी होता है। बोर्ड पढ़ के देख रहे हैं, बट स्टिल इट्स द एफर्ट दैट काउंट्स, इट्स द नॉलेज दैट काउंट्स। वेदर इज लाइक कूल बट हॉट, द शेड्स इज अच्छा है। कैसा लग रहा है आदि तुमको अभी तक? बहुत अच्छा, पर पसीना का दिक्कत है। ओके, कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस के लिए? हाँ? अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहोगे? कम से कम हम लोग अलग रास्ते आ रहे हैं, हमें पेंगुइन में जाना है, पेंगुइन की तरफ, पेंगुइन के पास जाना है। I mean, माडागास्कर। गाइस गैस करो कि हम जू में और पेंगुइन कैसे देखते हैं? गैस करो। गैस करो, रेड और ब्लू, ब्लू ब्लैक और वाइट कि अरे ब्लू और दीदी हम वाइट? लोग गलत जगह में आ रहे हैं, नहीं, हम लोग उधर से आ रहे हैं। तो वो वैसे आ सकते हैं ना। हम यहाँ से जा रहे हैं, वो वहाँ से आ रहे हैं, सही सेम ही चीज है। हम जस्ट टाइगर से मिलने जा रहे हैं, तो फिर देखते क्या क्या रिएक्शन देगा। पानी पी रहा होगा या दहाड़ रहा होगा या तो खुद को खुजली कर रहा होगा या तो ऐसे शांति से डर के बैठा होगा। कमेंट में आपको कमेंट करके बताओ, तो फिर मैं आपको पेटीएम में 999 रुपए दे दूंगा। 999 तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? उतना पैसा तुम्हारे पास कैसे है? सिक्कों से। किससे? सिक्के। सिक्कों से फिर काउंट करना पड़ेगा ना, तो इतना टाइम लग जाएगा। 1 लाख, 1 लाख का डिब्बा है पूरा। अच्छा, वो डालूंगी वीडियो में। so for a hot day like this आपको बहुत चीज़ें एसेंशियल होती है, जैसे कि रिफिलेबल वाटर बॉटल एंड ऑल दैट। तो मेरे पास सबसे अच्छा चीज़ है Oh shit. उठाना है क्या? उससे क्या होगा जब तो उसका प्लान अपहरण अपराजिता अपहरण बोलते हैं ना। किडनैप, आदमी किडनैप को अपहरण बोलते हैं। हाँ तो वही तो बड़ी अपहरण अपराजिता। किसी आदमी को किया जाता है ना कि उसको तो तुम उसका आदमी जैसे हो रहा है ना, तो चोरी अपराजिता साउंड वेरी बैड। अपहरण अपहरण होता है भाई, अपहरण अपहरण आम ऐसा होता है पागल। इसमें लिखा है ऑल ट्री, ऑल ट्री, मोरिंदा समथिंग समथिंग। I'm tired. अब कहाँ आए हम? अब हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया में आए हैं
देखिए भाई, उधर ताज होटल है, पीछे ताज होटल, उधर ताज होटल है, उधर नया ताज है, उधर पुराना ताज है। तो देखिए पुराना और इधर ताज, वाह ताज है। वह ताज भी है। और यहाँ पे आज राज्यपाल का आगमन हुआ है, इसलिए हम लोग आए हैं राज्यपाल से मिलने। यहाँ पे देखिए दूर पे गाड़ियाँ दिख रही है। उस साइड चलो, वहाँ से अटल सेतु देखेंगे। अभी हम आ चुके इधर गेटवे ऑफ इंडिया। ये देखो गाइस, ये रहा। और यहाँ पे और कैसा लगा तुमको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चल रहा है क्या? पर थक गया हूँ सुबह से लेकर शाम तक। सुबह तो कुछ किया भी नहीं, दोपहर में हम लोग घूम रहे हैं। हाँ, मतलब इट वाज फाइन। दोपहर को 1 बजे से 4 बजे हम इधर पहुँचे और अभी कितना बज रहे हैं? कुछ नहीं, घड़ी पे दिखाओ, घड़ी पे 5:51। लेट्स गो। हम लोग आई गेस घर जा रहे हैं अभी। हाथ पकड़ो। डे वेल स्पेंट।